Good morning, children. As I promised you, after revision of square and square roots, cubes and cube roots, I will do some problem. Still, at this moment, when I am preparing this video, I have not received any doubts from your sides. So, I have taken some random question from brain teacher of squares and square root. Here are some the brain teacher, part brain teacher. Question number 3 is given that find the value of a square root 3.1428 plus root under 0.31428. You see here both the numbers are same, but the decimal place are at different. Correct to 3 places of decimal. The next question, simplify square root 49 plus square root 0.49 plus square root 0.0049. Again these number are same. If you just neglect the position of decimal, you find everywhere you are 49, but the position of decimal again in this question at different places. So approach of these two questions are in two different ways. Now the third question, what is that number which when multiplied by itself gives you 227.798649. वह कौन सी नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर ये नंबर देगा? सिंपली यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 227.798649. आइदर यू गो फॉर डिवीजन मेथड और यू गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन. इट इज बेटर टू फाइंड इट बाय डिवीजन मेथड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ ब्रेन टीचर. इन a lecture hall, 8,649 students are sitting in such a way, in such a manner that there are as many students in a row as there are rows. उस हॉल में जितनी रोज है, मान लो 100 रो है तो हर रो में 100 बच्चे बैठे हुए हैं. 10 रो है तो हर रो में 10 बच्चे बैठे हुए हैं. सो दैट मीन्स अगर हर एक रो में 10 बच्चे हैं और देर आर 10 रोज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 10 into 10. मीन्स 8649 is square of some number and you are required to find how many students are there in each row and that number. So simply it is the application of a square root. Find the square root of 8649. You will get the answer. In the next question, this is from Hartz on the same exercise. If root 2 is given 1.414, root 5 is 2.236, root 3 is 1.732, this value you must remember. In future you will get help from these values. Find the value of, first question is root 72 plus root 48 and second root 125 by 64. And the last I have taken from enrichment part. Write a Pythagorean triplet if one of the number is 14. Okay. So from these I am trying to do some question. So starting from subject each enrichment, you are required to find a Pythagorean triplet if one of the number is given 14. Now first of all, if you find the number is even, then there is very simple formula. Write down it as 2m. So what is m here? M is 7. Then find m square minus 1 and m square plus 1. That is 7 square minus 1 and 7 square plus 1. You will get 48 and 50. So the numbers are, Pythagorean triplet is 14, 48 and 50. This is simple when the number is even. Number is even. You just find out 4. If one of the number is 4, if one of the number is 4, तो इसको हमने 2m बनाया तो m क्या हो गया? m हो गया 2. तो one number is m square minus 1, that is 4 minus 1 3. Another is m square plus 1, that is m 4 plus 1, that is 5. So 3 4 5. Always write down in ascending order. 3 4 5 is the Pythagorean triplet. So this is when the number is even. What about if number is odd? That is the problem. So if number is odd, suppose in the same question if 3 is given, what do we have to do?
we have to do just find its square and divide it by 2. Find its square and divide it by 2. You will get what? 9 by 2, that is 4.5. Once you minus 1, एक ये निकाल लीजिए और एक बार ऐड करके निकालिए, सॉरी 0.5 को घटा लीजिए और 0.5 को जोड़ लीजिए. सो इफ यू माइनस 4.5 minus 0.5 you will get 4, and 4.5 plus 0.5 you will get 5. Is it or not? So this is the important part. When the number is even, you will get a simple thing, that is 2m and m square minus 1, m square plus 1, and it is given in the revision work also. And when number is odd, then other two numbers are n square by 2 minus 0.5, or you can say minus 1 by 2 and n square by 2, या सिंपली आप कह सकते हो इस तरह से n square minus 1 by 2, n square plus 1 by 2 if n is given to be odd. वहाँ जो नंबर था उसका हाफ को m लेना था, यहाँ नंबर को ही m ले लेना है. ठीक है. दिस इज द, नाउ कम टू द सब्जेक्ट इज ए हॉट्स फ्रॉम. The first question is 72, root 72 plus root 48. Now simply you see 72 is the product of, देखो जब तक हम लोग इस एक्सरसाइज में पहुंचेंगे तब तक हमें बहुत कुछ हमें मालूम हो जाना चाहिए. So can I write it as 36 into 2 and this is 14, 16 into 3. एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें वो फैक्टर मिले, परफेक्ट स्क्वायर हो. तो 36 6 रूट 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 3. एंड नाउ पुट द वैल्यू यू आर गिवन विथ, दैट इज 6 into 1.414 and plus 4 into 1.732. Multiply, add, you get the answer. How will you get about 125 by 64? Okay. Now again 64 is a perfect square. 125 is not a perfect square. 125 by 64. It is 5 into 5 into 5 and it is simply 8 into 8. Now this is not prime, but we find that these two numbers, 8 is the square root of 64. So for 2 5s we get out 1 and this is 8. 5 by 8 into what is the value of root 5? It is given that 2.236. 2.2236. Simplify it and get the value of this one. So we have done this question as well as subject enrichment. Now the next part is finding the square root of 8649. Either you go for prime factorization or you do it by division method. As I am going to perform this as division method, make a pair. 9 9 ja 81. We are left with 5 4 9. Bring down the pair. Adding it we get 18. Here simply 3. Since here is 9, 3 3 ja 9 or 7 7 ja 49. 3 3 ja 9 and you will get this one. So square root of 8649 is 93. So number of students in each row is 93. I suggest you, whenever the number is large, more than 5 6 digit, you go for division method. If it is not mentioned that you have to find the square root by factorization method or repeated subtraction method, you do it by long division method. Again 227.798649. What is the number when multiplied with itself gives you this one? Means you are required to find the square root. Again I am going for division method. So before decimal, this is a pair and this is unpaired.
or from after decimal left to right, this and this. So first we do for this one, 1 ja only, 1 ja. Adding these two, you will get 2, subtracting you will get bring down the next pair, 27. What the number, you think about the number, I am thinking about 5. 25 5s are 125. If you think 6, 26 6 is 132, which is more than 127. So next number is 5 and this is 15. To bring down the next pair, 79, add 30. Now if you are going to put here 1, it is 301 into 1, okay, more than. So no, you have to bring the next pair. So for that we put a 0 here and a 0 here and bring down the next one, and now we have 300. Think about it. I am thinking about 9. Why? If you practice much more question, you can also find 9 9 ja 81, 0 and 9 3 ja 27. Add them, 8 1 0 3. This is 5 0 9, exit, and bring down the last pair, 49. It must be 3, so that you will get 3 3 ja 9, 3 8 ja 24, 3 1 ja 3, 5 0s 9. Done. So this is the third one. So यहाँ पर ये चीज़ देखना था, 279 इज, यहाँ पर 30 था मेरे पास पहले, अगर हम यहाँ पर कम से कम 1 रखते तो 301 हो जाता, जो इससे ज़्यादा था, यानी ये नंबर अभी कम पड़ रहा है. सो अगेन वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर. फॉर दैट, जैसे डिवीजन मेथड का बात था, यहाँ भी हम एक 0 और एक ऊपर 0 डालेंगे. फिर इज इट. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, मीन्स व्हाट इज द रिक्वायर्ड नंबर. रिक्वायर्ड नंबर इज 15.093. Required number is 15.093. Now come to the question number 4. 4 is, you are required to find the value of this. Okay, you are required to find the value of this plus 0.0049. What you see here, this one 49. Can I write 7 into 7? So square root 49 is 7. What about this one, 0.049? You will simply say that it is 49 by 100. So 49 का तो square root 7, and what is the square root of 100? It is 10. So it is 0.7. So आप डेसिमल के बाद एक पेयर था, 49 का हमने स्क्वायर रूट 7 अगर निकाला और जस्ट 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल रख दिया, तो एक डिजिट के बाद उसका इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पर अगर डेसिमल को हम राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं तो उसका जस्ट आधा उसके आंसर में हाफ उसके डेसिमल जाता है. द सेम वे अगर मैं कहूँ कि अब मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पर 2 पेयर है, यानी 4 के बाद है डेसिमल. 49 का स्क्वायर रूट हम जानते हैं 7 होता है, 4 के बाद डेसिमल है तो हम 2 के पहले डेसिमल डाल देंगे तो आंसर हो जाना चाहिए. यू कैन चेक द फैक्ट. दिस कैन बी रिटन एज 49 बाई 10,000. दैट इज 7 into 7 and 10,000 it is 100 into 100. So take out one pair. 7 by 100 is 0.07. So the answer is 49 plus 0.49 plus 0.0049 is 7 plus 0.7 plus 0.07, that is 7.77. This is the answer. Now do you think in the same process the first one have been done, because the same number in both sides, if you ignore the position of decimal, 3.1428 and 0.03148. Now, my dear, here in this question the decimal is moved
एन इवन नंबर ऑफ प्लेसेस। 49 का डेसिमल यहाँ है, ये मूव करके यहाँ आया इस प्लेस में, मतलब 2 प्लेसेस मूव किया, इवन नंबर। इसमें 4 प्लेस मूव किया, तो आंसर लगभग जो न्यूमेरिकल वैल्यू था रिमूविंग डेसिमल, यू विल फाइंड हेयर the value of 49 square root 49 is 7, the value of square root 0.49 is 0.7, the value of square root 0.0049 is 0.07. But can I say that if I can find the square root of this or this, then immediately we can find the square root of other? No, because here decimal moves only one places. Decimal moves an odd number of places, so the value of these are not correlated. They cannot be related. So let us do, how can you find this one? So I am taking this very question as what is the question? 3.1428, 1428, and one is 0.31428. okay, so let us try to do these two. अब यहाँ पर हमने डिवीजन मेथड स्टार्ट कर लिया। डेसिमल के बाद इधर पेयर नहीं, इधर हमने 2 पेयर बनाया। 1 से किया, 1 आया, 1 लिखा, घटाया, सब्ट्रैक्ट किया 2, ऐड किया 2, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर 14, थिंक अबाउट अ नंबर, whatever number may be. If I am thinking about the 7 or 8 or 9, 29. What is 29? 9 ja 9 9 ja 81, 9 2 ja 18, 18 and 8 26. It is more than 200, so 9 नहीं लगेगा. Just I am thinking about 7. 7 7 ja 49, carry 4. 7 t ja 14, it is 189. It is less than. So one more number I think I am going to think about 28 of 8. 8 8 ja 64, carry 4, carry 6. 8 2 जा 16 एंड 16 और 6 2 2, सो नहीं लगेगा, तो 7 टाइम्स हमने लगाया 189, ऐड किया इट इज़ 34, घटाया 14 से 9 5, 10 से 2 ओनली, एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पेयर 2528. एंड व्हाट माइंड इट, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इट करेक्ट टू 3 places of decimal, or yes, 3 places of decimal. So what we have said, I had said that we have to make, if correct to 3 places, 4 pairs after decimal. So there is only 2 pairs, so 1 and 2 pair more. Okay, so 2528, 34, 8 3 जा 24, कैरी हो जाएगा तो 8 तो नहीं लगेगा। 7 से देखते हैं, 7 से देखते हैं, 3 4 7, 7 7 जा 49, carry 4, 7 4 जा 28, 28 4 and 32 carry 2, and 7 3 ja 21, 7 3 ja 21, and that is 3. Okay, it may be 2 4 7. So we are adding here 7. 7 7 ja 49, carry 4. 7 4 ja 28, 4 32 carry 3. 7 3 ja 21, 3 24. So here 1.77. Okay, subtract from 18 it is 9, from 9 it is 7, from 4 it is 0, so 79 here. Now bring down the next pair. Next pair is what? 0. We have made it. After decimal we can add, after the unit place we can put how many zeros as we required. Here adding we get 3 5 4, 3 5 4. 3 से करेंगे 3 जा 9 ज़्यादा होगा, 2 से ही करना पड़ेगा, 2 से किया. 3, this is 4, this is 8 and this is 70. 2 times is 6, 9 say 1 and this is 8. 8 1 6. Bring down the next pair. Here we find 3 5 4 4, and this correct to 2 places we have to go for 4 decimal places. Now this is, if you put here 3 3 जा 9, so 2 times ही लगना चाहिए. क्या लगेगा?
2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10, कैरी 1, ओके जो भी है आप 9 से लगा के 3 से लगा के देखो 3 3 या 9 मोर हो जाएगा. सो दिस इज 2. ओके सो वी हैव फाइंड आउट द square root of 1428 as 1.7722. Correct to 2 places of for 3 places of decimal. Now here I am not going to simplify. I am going to find the square root of the next number. That is decimal is here 0.31428. Correct to 3 places of decimal. So we have make in pairs. After decimal, before decimal there is 0. So after decimal 1 pair, 2 pair, 3 pair and then 4 pair and do the division process. Here first pair is after decimal, so put here decimal 31, 6 6 are 36, so 5 we have taken 5, 25 minus किया add किया, that is 5. Bring down the next pair, that is 42, 1 0, we can take 6 here, 6 6 the 30, ये आएगा. बहुत अच्छा. सो सब्ट्रैक्शन के बाद ये हो गया 112. अनदर पेयर को किया हमने. नाउ दिस इज 3 डिजिट नंबर and if you put 1 here we will get a 4 digit number, so no. So what we have to do, we have to bring down the next pair. For that we have to put a 0 and then we have to bring down the next pair. 68000, 68,000, 1 1. 6 से लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना. क्या होता है 6 दूनी 12, 6 का 6 7, 6 हो गया, लग जाएगा. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 0.31428 इज 0.5606. What you see here in these two, the answer is quite different. In spite of the previous question 49, 0.49 and 0.449, 0.0049, you will find the answer is quite similar. Only places of decimals are at different places, but the numerical value is only 0, only 7. So now 3.1428 plus 0.31428 is 1.7722 plus 0.5606. Add them, you will get 8, 2, 13, carry 1, 7 5 12, 13 carry 1 and 1 1 2. Since it is correct to 2 places of decimal, so what we have to do, put here a boundary and see the digit at 4th places. It is more than 5, more than or equal to 5, is it or not? Yes. So remove it and add plus 1. So what do we get? 2.333 as the answer. 3. ये 8 से 8 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको हटा देंगे, इसके बदले में 1 इस थर्ड डिजिट पे ऐड कर देंगे. 333, 2.333 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्लियर है? तो ये था आपका स्क्वायर रूट का कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस. नाउ आई एम गोइंग टू डू some questions from cubes and cube root. Okay, now I have written few questions from brain teacher of cubes and cube roots. It may be of your choice or may not be. Few of questions I have done in previous video when I was giving the video on cubes and cube roots. You will find solution there. So revisit the video. मेरा वीडियो का आपके पास अगर होगा आपके इसमें तो आप देख सकते हैं. अदरवाइज़ कोई भी वीडियो होगा उसका लिंक आप फॉलो करोगे
तो वो लिंक मेरे चैनल को जाएगा यूट्यूब का, वहाँ से आप पुराने कोई भी वीडियो खोज सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको मिल जाएगा। नाउ पहला क्वेश्चन है, मैं रीड आउट करता हूँ 1B, पार्ट 1B। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू show you few questions. In the first we have done worksheet 2 already, है ना। Value based question. In this question you find the value, only value of the question are of the same type. Finding the cubes. Agents of a school collected provisions like rice, pulses, etc. for the flood affected people of Madhya Pradesh. These provisions were packed. These provisions were packed in the 6 cubical cartons, each of side of 65. Cubical carton थे. Find the volume of cartons packed. So what should be the volume of carton? It is side to the power 3. So 65 to the power 3, and since there are 6 cubic box cartons, so the volume of cartons is 6 into 65 whole cube. First one. What values do you learn from the students? Students are caring, helping. किसको केयर कर रहे थे वह? फ्लड अफेक्टेड पीपल को, जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बच्चे हेल्प कर रहे थे खाने पीने का सामान देके। तो दे आर केयरिंग, they have some value about the flood affected people, but because the flood affected people are deserving some provision, are lacking some provision like rice, pulses, etc. In these days you will find that all people are affected by corona. Here you see we can purchase from shopping center, but there are many people who are homeless in different areas, जिनके पास रोज कमाकर खाने का था, उनके पास खाना नहीं है। तो you will find that there are people who are helping them. Now what is the second question of this part? A school decided to award prizes to students for these 3 values: discipline, cleanliness and environment. Cleanliness of environment and regularity in attendance. डिसिप्लिन में बच्चे हैं, उस पर अपने आसपास के वातावरण को कितना साफ रखते हैं खुद साफ रहते हुए, और अटेंडेंस में उनकी रेगुलरिटी क्या, इन 3 चीज़ों पर स्कूल अवार्ड देने जा रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइजेस इन द 3 कैटेगरीज आर इन द रेशियो 1:3, 1:2:3। डिसिप्लिन में अगर 1 बच्चे को मिलता है तो दूसरा जो है क्लीननेस में 2 बच्चों को मिलेगा, और तीसरे वाले में 3 बच्चों को मिलेगा। इफ प्रोडक्ट ऑफ द रेशियोज इज 162, मीन्स ये तीनों जितने भी नंबर है उनका प्रोडक्ट, अगर रेशियो का प्रोडक्ट 162 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग प्राइजेस इन ईच वैल्यूज। नाउ हियर यू सी, यू जस्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एज x, 2x and 3x, multiplied them and write them 62. I think I had done in this question in previous. So this is 6x cube 162. So 162 by 6 is x cube. 6 2 ja 7 ja. So x cube is 27. 27 is a cube. What is its cube root? Its cube root is 3. So the value of x becomes 3. So first one is 3. सेकेंड वन इज 6, थर्ड वन इज 9। 3 बच्चों को डिसिप्लिन में मिला, 6 बच्चों को क्लीननेस में मिला, और 9 बच्चों को अटेंडेंस में मिला। एंड नेम द अदर 2 वैल्यूज दैट यू कैन इनकलकेट। बच्चों में और कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए वो आप 2 और कोई लिख दो, ऑनेस्टी लिख दो, है ना, पंक्चुअलिटी भी डाल सकते हो, हेल्पिंग नेचर लिख सकते हो, देयर आर सेवरल, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन हियर, ब्रेन टीचर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ 0.1, क्यूब ऑफ यानी 0.1 into 0.1 into 0.1. तो 1 into 1 into 1 is 1, and since decimal place is 1 and it multiplied by 3 times, so we have put 3 places decimal. So this one, second one is the answer, 0.001. This way
you can do all the questions brain teaser I had given you. Now I am going to do the problems which I am listed here. The first one, find the number whose cube is 1728. Means you are required to find the cube root of 1728. Okay, so you can do by factorization method. Here in finding cube root we have only cube root method. So 1728, go for 2, you will get 864, 2432, 2116. It is 232, 216. Then again 2128, 264, 232. We are making some mistake here. 108. So 2 it is 108 is 54. Again 2 27. Now 27 is 3 into 3 into 3. So 178 को क्या पा रहे हैं? 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, and 3 into 3 into 3. This is the cube root of 1728. एक निकालिए, दूसरे ग्रुप से एक निकालिए, दूसरे ग्रुप से एक निकालिए. तो 2 to the 4 3 is 12. Cube root of this number is 12. I think we have done it. What is the cube root of this one or this one? Now cube root of, यहाँ लिख लूँ मैं, 216 into minus 125. Nothing else. You can do in the same part. 206, it is 6 into 6 into 6, and it is minus 5 into minus 5 into minus 5. It is not necessary now, I am telling you. If it is not asked to find it by prime factorization, if you are able to find the number which can be multiplied thrice gives you a number, then you can write down also. Otherwise, you take 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. So bring down this as a pair 6, and next as a pair minus 5, it is minus 30. What about cube root of 0.000001? Okay, write down as a rational number 1.1. How many zeros must be there? 60. Now this is cube root of. Cube root of 1 is 1 into 1 into 1, and नीचे वाले को आप लिख सकते हो 100 into 100 into 100, 100 into 100 into 100. You can make without going for prime numbers. So from numerator you get 1, and from denominator out of group of 3 you will bring down 1. 1 by 100 is 0.01. Or simply we know that cube root of 1 is 1, and here जितने भी नंबर हो उनको ट्रिपल में बनाकर 3 हिस्से में है, मतलब 6 नंबर हैं, तो 3 प्लेसेस के बाद नहीं डालकर 2 प्लेसेस, 2 3 या 6, 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल डाल देंगे. So that is the answer. Now second question is, prove that if a number is tripled, let the number, यह तो थ्योरम जो कंसेप्ट था, फैक्ट था, वो दिया था, let the number be x. So if its triple क्या है, is 3x. So you are required to prove that cube of this, not write down here 3x, cube of triple of x, that is 3x, that is 3x whole cube, is what? 3x into 3x into 3x. It is nothing but 27x cube. Yani 27 times the cube of the number, which is 27 times the cube of the given number, and it is proved. Simple. Is it or not? केवल घुमा दिया, बच्चे घबरा जाएंगे. Find the next question 6. ब्रेन टीचर में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर.
6. Find the smallest number which when multiply with 3600 such that product becomes a perfect cube. Also further find the cube roots. 3600. Now here cube root, इसमें कौन सी छोटी संख्या आप मल्टीप्लाई करोगे? तो सबसे पहला आपका काम होगा कि 3600 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें. यहाँ निकालना पड़ेगा आपको. तो पहले 2 से कितना हो गया 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से. मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसको जितना लिखा उतना लिख ले. पहले 2 से 225, ओके 4 2s मिल गए. अब 225 5 तो हो ही जाएगा कम से कम, तो 5 ही लिख लो. 5 4 जा एंड 5 5 जा, फिर से 5 लिख लो. 9, फिर से 3 3 लिख लो. क्या बोले 2 5 मिले और हमें 2 3 मिला. ठीक है ना. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? तो इसमें तो साफ साफ लग रहा है कि ये तो ट्रिपल में है, ये ट्रिपलेट में नहीं है, ये भी ट्रिपलेट में नहीं है, ये भी ट्रिपलेट में नहीं है. तो मेकिंग देम इन ग्रुप ऑफ 3 वी रिक्वायर्ड हेयर 2 2s, 1 5 and 1 3. यानी एज ए टोटल यू कैन से 5 3s are 15 4s are 60. The smallest number is 60. Is it or not? You just think about that. I find 60. So since 3600 cannot be expressed as triplet of prime numbers, so it is not a perfect cube. It is not a perfect cube. To make it perfect, ये लिखना जरूरी नहीं है. To make it perfect cube, to make it perfect cube, we need 2 into 2 into 5 into 3, so that 2, 5 and 3 are in the groups of 3, in the groups of 3. So 60 is the equal to 61, a smallest number to be multiplied with 3600 so that the product is a perfect cube. Perfect cube. So now 36 into 60, 216,000. ये हो गया हमारा नंबर. What should be the cube root of that number? Simply, ज़्यादा आपको नहीं करना है कुछ. जो आपने पहले फैक्टर लिखा था 2 into 2 into 2, और फिर इस 2 को 3 में बना दिया, तो इसको भी लिख लीजिए 2 into 2 into 2, और वो 2 5 को भी आपने 3 बना लिया, उसको भी लिख लीजिए 3 में, और फिर लास्ट वाले को भी लिख लीजिए 3 में. एंड फॉर दैट ब्रिंग डाउन 1 2, देन अनदर 2, राइट डाउन हियर 3 ऑल्सो. 3 क्यूब 2 2, और इस 5 के 3 के 5 में से एक निकाल लीजिए, अनदर निकाल लीजिए. व्हाट यू विल गेट? 5 3 जा, वो 60 होना चाहिए. 5 3 जा, मतलब यही 60 जरूरी नहीं है कि जो मल्टीप्लाई हुआ वही आंसर हो जाएगा, इसका 60 होगा. 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60. So the both answer, the smallest number is also 60 and perfect cube is also 60. Don't take it as a concept कि what is the smallest number, that should be also a perfect cube root. No, this may vary. So this is the 6th question. Now we have to think about few more questions, 2 more questions, and here I am taking this one. This question, cube root of 0.27. Just I am writing here cube root of
0. डेसिमल यहाँ से हटा रहा हूँ, तो 27 इसके लिए 1000 लिख दिया, नीचे 0.008 है, 8 लिखा, इसके लिए भी ऊपर चला गया 1000, तो ये तो कट गया। डिवीज़न सेम प्रोसेस मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, 9/100 एंड दिस इज 4 का 100 चला गया ऊपर एंड -1, 100 एंड कैंसिल। So what is the cube root of 27? Cube root of 27, now you can write down 3, cube root of 8 is 2, division, a square root of 9 is 3, a square root of 4 is 2 and -1. तो first we have to divide, 3/2 में 3/2 से डिवाइड करेंगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा लिखने के लिए 3/2 इंटू 2/3 एंड -1, कैंसिल। So 1 minus 1 is 0. So answer of this question is 0. And this is subjective question, so we do like that one. And the last question you have to guess. You have to guess about this number. Ki what is the cube root of this number? As I told you in the second video, revision 2, part 2 of the revision video, guessing estimating a perfect cube for a perfect cube number is nothing but bring the first group of 3, 8, 5, 9, its unit place is 9, किसका क्यूब 9 होता है? सोचिए, किसका क्यूब 9 होता है? तो we see 9 9 जा 81, 9 जा 70, सो 9 का क्यूब 9 होता है, तो हमारे यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। हमारे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है ना? इसके यूनिट क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। एंड 6 इन विच 2 कंसेक्यूटिव क्यूब्स, perfect cubes, 6 lies. 6 lies between 1 cube and 2 cube, because 1 cube is 1 and 2 cube is 8. So 1 और 8 के बीच में 6 है, तो 1 cube and 2 cube के बीच में 8 6 है, so first one 19. I am guessing 19 is the cube root of 6859. On the same way, take this as a group. कौन से डिजिट का क्यूब के यूनिट प्लेस पे 7 आता है? 3 3 या 9, 9 3 या 27, सो 7 3 में आता है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 3 होगा क्यूब रूट के। एंड ये 12 जो है किस 2 परफेक्ट क्यूब, कंसेक्यूटिव परफेक्ट क्यूब के बीच में है? निश्चित रूप से 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के बीच में है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 2, स्मॉलेस्ट 23 इज द क्यूब ऑफ दिस वन। एंड द लास्ट 32 768, 768 यूनिट प्लेस इज 8, द क्यूब रूट ऑफ 2 इज 8, सो इसके परफेक्ट क्यूब रूट में 2 यूनिट प्लेस पे आएगा ताकि 2 का क्यूब 8 आए, गेसिंग है। एंड नाउ 32 इज इन बिटवीन 27 एंड 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, 27 and 64, smallest is 3 cube, so write down here 3. So the guessing work for this and these are these cube roots of 6000, जो भी था नंबर 859 is 19, 12,167 is 23, 32,768 is 32. So this is what the brain teaser of cube and cube root. Dear students, I tried my level best to give you some solution of some typical questions of the 2 chapters already given in previous PPTs as well as videos, and try to solve them. Yesterday I have given the exercise also, last exercise of the cubes and cube roots. Previously I have given the worksheets of square and square roots. Try to solve these 2 and tell me what is your response. So thank you, have a nice day.